identify them. Yes, we've seen palaces. This looks amazing. We've seen sand dunes. We've seen, but this is nothing of that sort. This was Rajasthan that nobody has seen. And if you see westerns, you see that they have a certain tonality and a certain vibe to it, and we tried to organically fit it with this story into that world. Yeah, you can almost feel the dry air and the chapped lips and the cracked, you know, it looks beautiful. Apparently, so Anurag Kashyap has co-written the dialogues with you? Yes, this line is his, the whole Sholay line is he's written the dialogues, yes. Acha, lovely. So that is amazing. My next question is to you, Satish ji. You know, ऐसी क्या आपको स्क्रिप्ट में, स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट में बात लगी जिससे आपको लगा कि ये रोल तो मुझे करना ही है, I'm not gonna let it go? दो चीज़ें थी. एक तो मेरे को अनिल ने बहुत पहले एक बार हर्ष ने बनाया था इसका एक जिसे बोलते हैं ना को शूट करके कोई थोड़ा सा पोर्शन और वो हमने अनिल के घर के स्क्रीन पे देखा था. उसी वक्त लगा था कि कुछ अलग प्लान हो रहा है, कुछ अलग एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आज हमें दिखाई दिया यहाँ पर. इसका बीज एक्चुअली तभी डल चुका था असल में, और तब दिखाई दिया तो वो खास बात, एक खास पिक्चर जो अलग तरह की है, जिसका जो परिवेश है जो बहुत अलग है, जिसकी कहानी कुछ दबी दबी कहानी है, ऐसी ऊपर उठती हुई कहानी नहीं है, जिसमें आप जो इंट्रीग क्वालिटी जो बोलते हैं ना कि इंट्रीगनेस है कहानी के अंदर, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी मुझे. और पहला ड्राफ्ट मतलब वो कोई पुराना ड्राफ्ट भी दिया था, वो ड्राफ्ट पे और बहुत काम हुआ बाद में, लेकिन बेस्ट स्क्रिप्ट के जो क्वालिटी थी वो ये थी कि इसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर और इसके अंदर कही हुई बात जो है ना वो दबी दबी थी, कोई बहुत सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं था. इट वॉज मच मोर ऑन द इंटरनल साइड. लाइक हम वेस्टर्न देखते हैं ना, हमको दिखाई देता है क्लीन ईस्टवुड अगर सिगरेट पी रहा होता था उसको बोलने की जरूरत नहीं होती थी, उसके फेस, उसकी क्लोजअप, उसके स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर आपको पूरी कहानी पता चल जाती थी. और जिस वो बैकग्राउंड में खड़ा हुआ होता था वो बैकग्राउंड में कुछ कह रहा होता था, वो लोकेशन भी कुछ कह रही होती. तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर जो है ना एक पहली रियल प्योर वेस्टर्न बनने जा रही है. वो स्क्रिप्ट पढ़ के लगा मुझे बहुत अच्छा लगा. और दूसरा ये कि अनिल कपूर प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स, हर्ष, डायरेक्टर राज, जो जिसका विजन मतलब जब उसने बताया था, सुनाया, वो ना वो सब चीज मिलके जो है बहुत अमेजिंग अमेजिंग. और आपकी हर फिल्म में एक लाइन होती है जो चिपक ही जाती है. सो आई वांट टू नो, इस फिल्म में भी आपको कोई ऐसा तकिया कलाम है या कोई ऐसी लाइन है जिसको हम आगे जाके कोट करेंगे कि ये वाली लाइन सतीश जी ने थार में बोली थी? मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने डायरेक्टर को बड़ा परेशान करता हूँ मैं, या कोई एक ऐसी लाइन हो जो ऑडियंस को हमेशा याद है. हाँ. मैंने इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है और वो मेरी ट्रिब्यूट है उन वेस्टर्न्स को भी. ऐसा वो परमिशन है वेस्टर्न हमने बहुत देखी ना, हमने बचपन से लेकर के वो हमको अंग्रेजी हीरो जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है. तो वो मुझे हर्ष को मैं पहली बार देखता हूँ ना और ये बोलता है पता कर इसके बारे में कौन लड़का है, तो मैं समझे ना, तो ये जब चला जाता है ना तो मैं तो बोलता हूँ हुकुम कोई अंग्रेजी पिक्चर का हीरो लगता है, ये कोने में बैठा बैठा सिगरेट पीता रहता है, समझे ना, देखता नहीं है किसी की तरफ. तो वो अंग्रेजी पिक्चर का हीरो लागे है ना, वो मेरे इट केम टू गिव ट्रिब्यूट टू द वेस्टर्न एंड द वे हर्ष लुक्ड एंड ही वॉक्ड, यू नो, फॉर मी ही वाज स्ट्रेट आउट ऑफ दोस, you know, westerns which we have seen. Which we've seen and related. Wow, that's amazing. जीतू, आपसे हम पूछना चाहेंगे, you know, आपने तरह तरह के जो रोल्स किए हैं या अपनी कन्विक्शन के साथ किए हैं. Tell us, आप जब कोई एक कैरेक्टर पकड़ते हैं तो अभी आपने बताया ऑफ कोर्स कि राज और आपने मिल के you know उसकी टोनालिटी बनाई कैरेक्टर की. What is your sort of method to crack the character that you're playing? मतलब जो मुझे एक सच्चाई बयान करूँगा, मतलब कि जब पहली बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना तो आपको कुछ नज़र आ जाता है, कोई एक आदमी उस जैसा. तो ये जो बंदा है ना, इसको देख के कई ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में पुरुष हैं जिनको मैं आई हेट देम कि वो पुरुषों की वो क्वालिटी जो है ना जो मुझे बिल्कुल भाती नहीं है, तो वो उसमें वो क्वालिटी थी. लेकिन राज भाई ने मुझे वो बताया था कि इसको ना ये नॉर्मल है, ये सोचता ही ऐसा है, तो इसको कहीं पोर्ट्रे नहीं करना है. और मुझे और एक बात, बहुत बड़ी बात मुझे अमन सर ने बताई थी जब हम लोग एक फिल्म कर रहे थे कि जीतू हमेशा याद रखना कि ये फिल्म में ये सीन क्या कर रहा है, उस सीन में तू क्या कर रहा है.
ये जैसे कि हर्ष ने बताया कि ये फिल्म है, ये किसी एक आदमी का ये नहीं, ये ब्यौरा इनका है, राज सिंह चौधरी जी का, कि ये कहाँ से देख रहे हैं और वो बता रहे हैं ना कि यहाँ से देखो इस कैरेक्टर को। तो वही मैंने करने की कोशिश की। बाकी बकबक तो बहुत कर पाऊंगा कि ये सोचा था वो सोचा था, लेकिन सच में बोलूं तो आपने डायरेक्टर की लेंस से देखा इस कैरेक्टर हाँ को, उसको निभाया। अमेजिंग. As you can notice, I'm completely skipping Harsh and Anil sir for questioning because I'm reserving those questions for all of you. But I have a question also to ask Fatima before we move on to questions that you will get from the audience. Fatima, इसमें आप एक राजस्थानी ब्राइड प्ले कर रही हैं, डेम्योर कैरेक्टर. आदत नहीं है. आदत नहीं है ना? Tell me there is a twist. उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर राज मेरा खून कर देगा. No. अंत में मेरी बॉडी दिखेगी. To be very honest, what I'm trying to say is कि आपने अभी तक जो भी कैरेक्टर किए हैं, चाहे वो दंगल हो या फिर ठग्स में आई वही प्ले warrior or you play a wrestler. How did you get the nuances of this demure Rajasthani bride? Right. Honestly, मैं इतना सोचती नहीं हूँ. I just am very instinctive and Raj knew what he wanted. So Okay. जुगलबंदी होती है, उनको पता है कि क्या चाहिए, क्योंकि he is very clear. He's lived with the script since God knows how long. But you're playing the bride, so. हाँ, but when the scene is written well, then आपका एक instinct होता है and कोई process नहीं है मेरा. I'm also learning, And what's Harsh like as a co-star? He's very good. He's very calm, as you can see that he's very shant also. But extremely dedicated, very hard working. He knows what he's doing and that's a great thing, and a lovely co-actor. आपको क्या चाहिए सेट पे कि कोई आसानी के साथ जिसके साथ आप एक्ट कर सको, जो आपको परेशान ना करे. और जिनकी विजन सबकी विजन सिंक में हो. सबकी विजन सिंक in the show. सब पैशनेट हो about the film that they're doing. तो बस. Amazing. This is really whetting my appetite. I have a lot more questions that you can see, but I'm going to leave a lot of questions for the cast, for our friends in the media. So I'm going to be handing the floor over to you. Please raise your hand. We have mics sent out to you. बताइए किसको सवाल पूछने हैं. There's a lady there right at the back. नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो की हीरोइन रोहिणी 91.9 FM रेडियो नशा से. मेरे शो का नाम दिया था अनिल कपूर ने, and that is why my show is called Jhakas Morning. Sir, you're looking fantastic. A big hand for energy, please. Thank you. So please Say something new. say something. Okay, can I say you are definitely the youngest looking Nana there ever will be. Sir, वो तो नहीं है ना? All in good time. है ना? Guys, all in good time. तो यस, सतीश जी और अनिल जी, आप दोनों से ये सवाल है मेरा, और वो है ये कि ये जो जुगलबंदी है आप दोनों की, सालों से हम देखते आए हैं. यू गाइज आर लिटरली आर टू फेवरेट पीपल टू वॉच ऑन द स्क्रीन सिंस द 90s. अनिल सर, आपसे यही सवाल है. 80s. So from the 80s till now. Get your decades right. Yes, time. On a retro radio station, we better do that, right? Anil sir, आपसे ये सवाल है कि what is that X factor between the two of you that keeps making you all come back together बार-बार आज 2022 में भी? एक ही चीज कहूँगा कि we both love films, we love being on the set, we love telling stories, and we love both of us love being part of. आप चाहते थे कि वो ये कैरेक्टर करे, तो क्यों आपको ये लगा कि इस कैरेक्टर के लिए सर ही परफेक्ट हैं? और आपको लगता है कि जो फादर्स एंड डुओ जब आप लोग साथ में आते हैं तो एक और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, एक वेल पैकेज कह लीजिए या ज़्यादा वो बन जाता है? Yeah, I think it's be easier to answer that question once you guys have seen the film. But no, I mean I just think we needed somebody. Raj wanted. Raj and I discussed the possibility of this happening with Dad, and it just fit. And I think once for me the idea was to just kind of try and make sure Raj gets the correct actors for all the roles, not just Dad's role, but even Fatima and Mukti and Jeetu ji and everyone. So Raj was quite sure about the fact that he wanted Dad, and then it just kind of happened from there. Also performing with him, Yeah. which like he's your father and he's Right. superstar.
तो जब एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो कुछ नर्वसनेस रहती है कि किस तरीके से आप लोग दोनों लोगों के? I think that ice was broken with Vikram's film, you know, and we shot, I think, AK versus AK for 2 or 3 days. I have a smaller role in that film, and that was quite a extroverted character that I was playing in that film, which was very different from who I am in my real life. So I think the ice was kind of broken there, and so by the time we got to Thar, so much time had been spent. We had done a film together, that this film had kind of come out, and I try and kind of focus on my job and not get overwhelmed by the situation or who else is in the film. So I don't really see it as you know, a family member or just kind of, because otherwise. Let me add to Yeah, that sorry, question, sorry. Harsh. Does the fact that you're acting with your father make you a little more edgy and nervous, or a little more comfortable? What is the Neither. fact? I think I just approach the scene the same way I would if it was anybody else. Amazing. Yeah. आपका माइक कहाँ गया? ले गए? ओह, किसके पास पहुंचा? Mike पहुंचा immediately. Okay, can we see some? 20-25 mic और लाओ. And let's see who else wants to put a question out. Right there, you already have a mic. Yeah. Let us. We will take a question. My question. Cool. Raj, I wanted to ask you, Indian cinema has always had a curious relationship with the Western, and we've had our own tradition of Daku films. Recently, we've seen a research of the genre. I'm talking about films like Sonchiriya, films like Lal Kaptan, you know, which what you call revisionist westerns, which put in a lot of social issues into the movies as well. Is this a similar exercise, you know, to explore characters, how local politics, things like that, or is it more stylistic? No, it's more stylish because the films that you mentioned, they have a sort of a Western sort of a vibe to it, but they haven't gone very deep into that genre. Only, in my opinion, there's been 2 films that have gone dive deeply into it. One was Joshile, incidentally, so was a part of that. Mr. Shekhar Kapoor was directing it earlier, and I think Sholay. But my inspiration comes from what I saw as a child after watching Clint Eastwood and all those films, and when I used to go to Rajasthan. So I belong to a part of Rajasthan that you see in the film, and it was born out of that. On that note, Anil sir, what are your favorite westerns that you remember watching and loving? So ये मैं क्या करता हूँ जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि I try my best that दुनिया में जितनी भी उस जॉनर में फिल्म बनी हो उस किरदार के लिए उस फिल्म के लिए, so I see all of them. So thanks to this, you know, the story, the script, I think I've seen most of the best westerns ever made in the world. And जैसे कि राज ने कहा कि कहीं ना कहीं there were other films, but very few films have been made in India. You can count on your fingertips. But yes, of course, there's all the Sergio Leone films. I'm a huge admirer of Sergio Leone. The way he would visualize, use the music, performances, you know, stylish but fun. You know, a lot of fun. So all the Sergio Leone films, and of course there is lately I've seen one of my favorite films is No Country for Old Men, directed by the Coen brothers. I just love the film. I love all the performances, and of course Once Upon a Time in the West, which commercially at that moment didn't do that well, but directed by Sergio Leone, you know, the music was great and I loved the film. So जितनी भी फिल्में वेस्टर्न बनी मैंने सब देखी, क्योंकि ये पेंडेमिक के 1 साल थोड़ी सी हमने बाद में शुरू की, बट इतना वक्त था मेरे पास तो मैंने सारी फिल्में देखी और बहुत मज़ा आया. But keeping that, this is, you can't say that this is a pure Western. It's got love, it's got passion, it's got violence, it's got suspense, it's a thriller. तो सारी चीज़ें हैं, because आज की फिल्म है ये, and डायरेक्टर और राइटर ने कोशिश की है कि today's younger generation can relate to it, because वो जो पुरानी फिल्में थी वेस्टर्न, वो उसमें people would not
somewhere feel कि नहीं यार वो बात नहीं है. But this has got today's field, and I think youngsters will relate to the film. All the young viewers, consumers. और आज हिंदुस्तान की जो majority audience जो फिल्में consume करती है, चाहे वो Netflix पे हो, चाहे वो theater पे हो, वो are these youngsters, and this film caters to those youngsters. I think. Amazing. I think we have someone right there with Hi Harsh, this for you. AK versus AK, Ray and Thar. Are you the new blue-eyed boy for Netflix? I hope that they still want to work with me after this one, because I've really pushed for what I wanted. But I the thing is, the idea is we're in a very interesting time in the world where you can make something and stream it anywhere on the planet. So I think the ability to do that through this platform is, you can't put a price on it, because you can't predict who your story is going to touch and what part of the world. They have an incredibly broad spectrum of people that subscribe to Netflix, and it also takes away in a way is the whole monetary aspect of the first day collection and the satellite and all that, so you don't really have to, I mean, I never think about that anyway, but it just puts you at rest where it just becomes about the film. And they're great producers, they're the best in terms of, they're very understanding, they're sensitive and empathetic towards the artist, which is why you get to see AK versus AK, you get to see Ray, you get to see this, film like Bhavya Shoshi that doesn't do well in cinemas thrives on Netflix. It'll always be there. It has become what it has now today because of them. So I think no matter what happens, and wherever I go, I'll always be indebted to them. हर्ष, आपने हमें बहुत इम्प्रेस किया है आज ट्रेलर में. एंड मिर्जा के टाइम में एक कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि मैं एवरी 2 years एक फिल्म किया करूँगा. अब ऑलरेडी आप लेट हैं, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. कुछ कहें? No, I want to work a lot more, and I just think, as if the opportunity is there, I love to work. We all kind of want to be on set. The more you act, the better you get, and it's all about practice. But the idea is to not compromise on one's creative integrity just to go to work. I think sometimes less is more. I hope everybody likes this film. अनिल साहब, आजकल ये साउथ की फिल्में काफ़ी अपना सिक्का मना रही हैं. उनकी मेकिंग भी कुछ डिफरेंट लग रही है बॉलीवुड से. आपको क्या लगता है, कुछ कंपटीशन होने वाला है आगे चल के? ये गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं आप, क्योंकि साउथ ने हमेशा अच्छी फिल्में बनाई है, हमेशा. मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, हमेशा साउथ की फिल्में ने लोगों ने पसंद किया, चाहे वो राम और श्याम हो, चाहे वो एक दूजे के लिए हो. पता नहीं आप लोगों को ये फिल्में पता है ना? तो बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और वो बनाते रहेंगे. और दे ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन. मैंने अपना करियर साउथ से शुरू किया. मेरी पहली फिल्म जो थी वो एज अ लीडिंग मैन तेलुगु फिल्म थी, जहाँ से मुझे प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, डिसिप्लिन मुझे सीखने को मिला. मुझे बाबू साहब के साथ काम करने को मिला. उसके बाद मैंने फिर एक कन्नड़ा फिल्म की, वो भी साउथ की थी, मणिरत्नम की पहली फिल्म थी. एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की, एक्शन फिल्में की, रखवाला, इंसाफ की आवाज़. सतीश जी के साथ मैंने 2 फिल्में की, वो भी साउथ की एडेप्टेशन थी. हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, दोनों सुपरहिट थी. तो साउथ ने हमेशा अच्छी कहानियाँ, अच्छी फिल्म, टेक्निकली हमेशा ये दौर था, है और चलता रहेगा. फिल्में अच्छी आएंगी और वो अच्छा काम करते हैं. एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट डायरेक्टर्स विद ग्रेट विजन, एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड देम. एंड आई थिंक मुझे, आई डोंट गेट सरप्राइज. ये तो होना ही है और होता रहेगा जिंदगी भर. Right. We have someone right here who's been waiting for a question. Hello everyone, I'm Shachara from INS. Raj, my question is for you that in terms of music, apart from the Western spaghetti, there are also strong influences of the Rajasthani folk. So what was the idea behind the music design of the film?
So when we decided, Ajay Jayanti composed the music. When we decided on the music, it was that we will have a smattering of Rajasthani folk, but a larger picture would be that we would have music that is a little more in tune with the tone of the film. And we've seen a lot of Rajasthani music coming into films, Gujarati, Punjabi. So we wanted to move away a little and be a little true to the genre, but with a smattering of Rajasthani folk in it. We've used instruments that are generally not used. So. Okay, can we have questions? Hi, Anil. Sana here from Indian Express. Towards your right. Yeah. Harsh, of course, spoke about how he doesn't look at working with his father a very special or a different experience. But Anil, how has been your experience? Was that paternal responsibility comes in when you're shooting with him? And added to that, you worked with both Sonam and Harshvardhan. How different and similar are they as actors? You try to create sibling rivalry away. I'm sure it's there already. Yeah, no, it's not there. So, obviously, as Harsh said, that, AK was the film which, somewhere broke the ice, and that the tentativeness, the anxiousness was there for me on the first day when I was shooting for AK versus AK. Matter of fact, I was more nervous than he was, and but because it was a, long monologue. मैंने अपने करियर में इतना लंबा मोनोलॉग नहीं किया है. मैंने हमेशा डायरेक्टर बोलते हैं इसको तोड़ के लो यार, इतना लंबा मेरे से होगा नहीं. So when that long monologue came and when he gave the shot, and Vikram and Anurag both have been very encouraging as well as very, very critical about Harsh. They both, and they do it more out of love so that he becomes better and better. And so they both started, was, सबकी अनुराग ने ताली बजाई, विक्रम आके पहली बार इसको जाके हक कर लिया. तो मेरे को अनुराग हर्ष बोलते हैं पूरे भावेश जोशी में इसने आज तक इतने प्यार से बात ही नहीं की और हक किया. So there I saw what he's capable of. लोगों को एक गलत इंप्रेशन है कि वो सीरियस है, इंट्रोवर्ट है, sometimes perceptions, जैसे मेरे बारे में पहले कुछ perception था, फिर change हुआ, हर 10 साल में change होता रहता है. And इनके बारे में ऐसा था, तो जब मैंने देखा कि इस तरह इन्होंने वो scene किया, which was so funny, and I was happy that the entire media, all the critics and everybody just praised his work, and they loved what he did. तो कहीं ना कहीं रिलीफ भी था और खुशी भी थी, and I was proud. मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं नहीं फिल्म करता. AK वर्सेस AK मुझे ऑफर होती है और होता है कि भैया योर फादर इज देयर फिल्म एंड ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म और ये छोटा सा रोल करना है. मैं बोलता मेरे को फादर का रोल दो. You understand? So this is the way the younger generation is today. They are fearless, and at least he is. And which I admire and I'm very proud of it. And so when we were shooting in Thar, एक दो suggestion मैंने दिए, but the suggestions were rejected. मैंने बोला तो ऐसा कर, नहीं डैड ये गलत है. And then I said, अच्छा देख करेगा बता किया. Then he was right and I was wrong. So he did it in the way he believed was right. And of course, Satish was there. So Satish ने भी जब शॉट देखा तो मेरे पास बात तो है. You know how it is. तो बात फैलती है, वो पता चलता है. और कोई भी चीज़ जो धीरे फैलती है, उसका impact धीरे होता है. So that's what it is. So there is nothing very कोई ऐसी बात नहीं, कोई nervousness नहीं, anxiousness नहीं. I just enjoyed working with him, and it's a जैसे कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मैंने इसके बाल देखे. मैंने उदयन को बोला, उदयन इज आवर CEO ऑफ द कंपनी. मैंने यार कोई हेयर ड्रेसर या कोई मेकअप क्या कैसा लगा यार, मुझे बाल कैसे हैं और ये वो ऐसा. तो बोला यार बजट नहीं था. बजट नहीं था यार, मेरे से ले लेते पैसे. बोला नहीं यार, बोला नहीं वो बजट नहीं था. तो हमने सजेस्ट किया कि इसको कर ले. तो फर्स्ट डे जब वो हुआ
तो अपना बाल और हेयर तो फिर हर्ष ने बोला हटाओ यार, ना मेरे को हेयर ड्रेसर चाहिए ना मुझे मेकअप चाहिए. So this whole film is done without a hairdresser and there's no makeup man. Wow. ना कोई hairdresser है ना कोई makeup है. So that's the way today's generation is. They don't need this paraphernalia and entourage and all. तो उसने किया है. तो what you see on screen, there is no hairdresser, there is no makeup. हम लोग सब बाल जरा बाल ठीक करना यार. कैसा लग रहा हूँ मैं? That kind of stuff. But that's what it is. Yeah. Nice. Yeah. Can someone have a mic? Gentleman. Do we have someone that's Yeah. that side? Okay. Hi, Harsh. My question's for you. With this Netflix project, Thar, you're going to be debuting as a producer. How do you feel about this new role, and how has your experience been so far? It kind of just happened by accident in a way where this film was supposed to be produced by Vikram Motwani. He called me about it in March 2018 when he was editing Bhavesh Joshi, and it was supposed to be a phantom film. That's when I met Raj for the first time. After that, the company dissolved. They all went their separate ways, and there was no Phantom anymore. So I found myself in a situation where I was very new. I was only 2 films old. This was before Rain and AK vs. AK. Raj was new as a director, although he had acted a lot before. And we had a really interesting script which was very different from what was being made even now. But imagine that like 4 years ago, there was the streaming thing hadn't really kicked off the way that it is now. So we went around for a year to several producers, and at that time it was supposed to be a theatrical film, and it was, it's quite, I don't want to say too much about the film, but it's not your traditional stereotypical Hindi film format film. So that was a difficult process, so we persevered for about a year. In that year, we ended up spending a lot of time together. We used to meet at my house every couple of weeks to work on the script. And he knew that I was the protagonist now, so obviously he started kind of interpreting the character in a slightly more unique, different way. It was unique to me in a way. And so through that journey, the process kind of started, and then I think it was 2019, and a producer came to offer me a love story. And I said, I'm not too interested in this type of thing, but I have a really good script, why don't you read it? And he read it and he liked it, and he came on board at the time to do this film in a much smaller way than what you're seeing now, but we were quite excited, and at that time we started kind of casting and trying to put it together, and we spoke to Dad, after which we did a test shoot, what Satish ji talked about briefly. We shot 3 scenes from the film. I'll tell you what the scenes are after you see the film. But we shot it for very nominal, almost no money. We shot it in Andheri, somewhere in a rented space. And one scene out of those 3 turned out quite well. So we started shopping that scene around, saying that, this is the script, this is the test shoot, I'm going to act in it, Raj is going to direct it, Anurag has helped write it. And that's when Netflix came on board. So by the time we had a funder, had already been, Raj and I had been trying to do it for almost 18 months. Then we were supposed to shoot in 2020 March, because you can't shoot in Rajasthan in the summers, and then post the monsoons, it's too green, and we wanted more of a barren kind of landscape. So it was very seasonal in terms of when we could go, and then COVID happened. So this was right after the AK vs. AK shoot, so he was busy every day obviously on set. I had a small role, I finished it, got into prep. That's when we signed Shreya to shoot the film, and Vasik came and all of that, and then we were all ready to go, and then we had to wait at home for another 10 months. So in those 10 months, then he got free. We both sat on the script a lot more, developed it a lot more. Then Netflix were very kind to us because they gave us more of a leeway with the money that we could spend and how large really we could kind of make the film. And so for me, it's been 4 years. For him, it's been 4+ years. And it didn't, then obviously Netflix kind of had their own great ideas about the script, and so we collaborated with them. Then we went to shoot, then there were challenges on set, we came back, we watched edits, we bettered things. So it's been
incredibly educational, stressful but in a very healthy way. And I don't only, I think acting is something I'm doing right now and I'm really enjoying it, but for me, I don't think any of us should limit ourselves to saying, I'm only an actor and I'm going to be an actor for the rest of my life. You know, I'm somebody that just loves films. So I want to do it all. And there's no better way to learn than working. My question to Harsh. Harsh, just wanted to know how much liberty you took while working with living legend Anil Kapoor, because every actor's dream is to work with Anil Kapoor, and you have already in-house you have done. So how much liberty you took while sharing the screen? Liberty In acting? in terms of, oh no, I just, like I said, I think I was just focused on my job. You know, try not to get overwhelmed by the situation, and when you're in the scene you have to think of the other person as the character in the film and not the persona of the actor or the celebrity. And so I was just really focused on my role, really. Fatima, question for you. While sharing screen with Harsh, how was your experience and chemistry with him and Anil Kapoor sir? बहुत ही बढ़िया, मतलब amazing था, because like I said that he is very cooperative, very supporting. आज की बात कर रही हूँ मैं, हाँ Just to be clear. नहीं पहले ये बात. So he's been very supporting, and for him to be able to bring this project together is quite incredible at this young age. So with him I've had a great time, and with AK sir तो क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ. What an aura and magical aura this man has. He's incredible. Every time he would come on set, no, ऐसे there was this electrical bolt, मतलब bolt, क्या बोलते हैं उसको, bolt ही बोलते हैं, हाँ वो, and it's so infectious because the moment he would come in, you would all feel एकदम as if बहुत energy आ गई. Even like when I was low, I would just speak to him and instantly I would feel good. So he has this incredible magical aura, and I'm so glad that I got to share the screen space with him. So I'm very happy. And Satish ji and Jitu ji and Raj, you also, I love you too. Jitendra, my question is to you on your left. Yeah. So all of us have loved you as Kartikar in Sacred Games. Your look is amazing in this one. Are you expecting the same kind of love to come towards you with Thar? ऑडियंस से तो प्यार तब मिलता है जब पहले तो सेट पे जब आप काम करते हो तो आपके जो को एक्टर्स होते हैं और सेट पे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, साउंड करने वाले लोगों से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर सारे लोग ना, प्रोडक्शन जिस आदमी ने आपको आपका मेहनताना दिया है, मतलब पैसा दिया है ना, वो भी तो खुश होना चाहिए, फिर बाद में ऑडियंस खुश होगी. और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी फिल्म, मतलब जितने दिन मैंने जितने साल मेरी उम्र नहीं है उससे उसको 3 से 4 से गुनोगे उतनी फिल्में कर चुके लोग हैं. अनिल सर ने जब बोला कि हाँ मतलब जो बात की है मैं वो बात अभी यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था. और राज भाई जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, जिनका विजन है, तो काटेकर था. मेरा चयन ये है कि मैं अगर कुछ अलग कर पाऊँ तो वो मेरे लिए खुशी की बात है. और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जिसने ये विजन रखा, जिसने लिखा है, जिसने डायरेक्ट किया और जिसने इसमें अपना योगदान दिया है एज अ प्रोड्यूसर, उन सारे लोगों को अगर पसंद आए तो वहाँ पे तो मतलब आगे फिर ऑडियंस का है. ऑडियंस को मैं इस कैरेक्टर की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी. ये उनको अपनी फिल्म लगेगी, फिर वो यंगस्टर हो, चाहे वो मेरी माँ हो, माँ की उम्र की कोई इंसान हो, या कोई मेरी नानी की उम्र के इंसान हो, ये फिल्म सबको अच्छी लगेगी. Thank you, Jitendra. We have one. आपके मुंह में घी शक्कर. आपके मुंह में घी शक्कर. Fatima. We have time for one last question On your left. now, and so it's this one. Fatima, you've done action and physically intensive roles before, double tasks. I was curious. The Western is traditionally a very men's playground for action, but do you have intensive scenes like that in the film as well? एक्शन तो नहीं है यार, ऐसा जरूरी थोड़ा ना हर फिल्म में कूदूंगी.
नहीं, बट ऑनेस्टली फॉर मी ये जो जॉनर मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी फिल्में देखती नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट ये जॉनर जो है ये इस फिल्म के साथ मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा वेस्टर्न नाम का भी कुछ होता है, इस तरीके से शूट किया जाता है, ऐसी स्टोरी होती है, अलग ट्रीटमेंट होता है. सो आई एम ग्लैड कि थ्रू दिस फिल्म, थ्रू राज स्क्रिप्ट, दैट आई हैव गॉटन टू एक्सपीरियंस दैट. बट ये भी अपने तरीके से एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है क्योंकि एक्शन हर एक जगह है, बट ऐसे रोल्स करना भी एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है. Thank you. Thanks. So, ladies and This gentlemen, lady's question has not been answered the, yet. the first one. The first one, क्योंकि माइक नहीं था उनके पास. So I'm going to give मैं ये her नहीं चाहूँगा कि वो घर जाए. the mic. मेरा सवाल. He does. Yeah, my question is for Fatima. फातिमा, राजस्थान कितना एक्सप्लोर किया और पहली बार आप ग्रामीण महिला के किरदार में हैं, तो किस तरीके के लिए आपके लिए कैसी चैलेंजेस इस किरदार के लिए? राजस्थान तो बहुत सुंदर है और इस फिल्म के वजह से मुझे वो राजस्थान देखने का मौका मिला. रोल तो मैं बहुत इंस्टिंक्टिवली प्ले करती हूँ, तो स्क्रिप्ट में जो होता है आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर, एंड बिकॉज राज इज सच अ गुड डायरेक्टर, ही पेज अटेंशन टू द परफॉर्मेंसेज. इट वॉज वेरी ईजी टू प्ले दैट कैरेक्टर. आई डोंट नो लोगों को आई होप पसंद आए, बट मैंने बस कोशिश की है जो स्क्रिप्ट में लिखा है उतना करूँ. This is last question. But go on. I know we cut you off, in the first one. एक्चुअली सवाल ये वही था जो सना ने बाद में पूछ लिया कि आपको प्राउड फील हो रहा, मतलब कितना प्राउड फील हो रहा है स्क्रीन शेयर करते हुए हर्ष के साथ पे, तो उसका तो है कि उन्होंने जवाब दे बाद दिया. में पूछ लिया था. तो अभी फातिमा जी ने पूछा कि पता नहीं ऑडियंस को पसंद आता है मेरा काम नहीं, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भी बहुत लड़कियों के साथ काम किया, मगर फातिमा जना शेख एक स्पेशल एक्ट्रेस है, बहुत ही स्पेशल है. और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो करियर है अब एक बूंद ही हुआ है, अभी सागर बनना और बनेगा. And there is of course Mukti, who's over here, who's wonderful actress and डांस करती तो कॉम्प्लेक्स देती है, तो शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. तो पहला इनका डेब्यू है, पहली फिल्म है इनकी धार. सो थैंक यू मुक्ति फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड Mukti Mohan, ladies and gentlemen, the debut film has been really special for her. That is amazing, and I'd like to thank everyone. Mukti, we'd like you actually on stage, and Mudya and Pratiksha, you as well. Ladies and gentlemen, members of the press, thank you so very much for joining us today and sharing this big moment with us. I'm going to leave you now to take your photographs with the crew and with everyone. Thank you for being here and do enjoy the film. आवाज कहाँ गई? हाँ. You all have been wonderful, fantastic media. Thank you so much, all of you. Thank you. Zabardast, ekdam झकास.